Rahim. Assalamu alaikum. Today we are discussing MCPS March 2024 paper. A patient had emergency C-section due to failure to progress in labor. She started bleeding heavily. Infusion of oxytocin 20 international unit and 500 ml was started. The estimated blood loss is 1000 ml. Manual compression reduced द ब्लीडिंग. नेक्स्ट अप्रोप्रिएट स्टेप इन द मैनेजमेंट. तो जो भी आपके पास पीपीएच आए आपने ये एल्गोरिथम याद रखना है और इसी के अकॉर्डिंगली आगे मूव करना है. जो स्टेप हो चुका हो उसे नेक्स्ट मूव करें. अभी सबसे पहले रिसेसिटेट करें, मेडिकल ट्रीटमेंट दें और देन इंट्रायूट्राइन बलून, टेम्पोनाट, ब्रेस सुचर और इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के बारे में सोचें. यहाँ पर इन्होंने ऑक्सीटोसिन दे दी है. अब नेक्स्ट मैनुअल कंप्रेशन की. मैनुअल कंप्रेशन से जो है ब्लीडिंग स्टॉप होगी. जब मैनुअल कंप्रेशन से ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए यू कैन अप्लाई बी लेंच या ब्रेस सूचर्स. सो आंसर इज ब्रेस सूचर. A woman presented with generalized abdominal pain with bloating for 5 months. Pain is relieved after defecation. Her symptoms get worse during menstruation. What would be the most likely diagnosis? So our diagnosis is inflammatory irritable bowel syndrome. Irritable bowel syndrome में क्या होता है कि patient usually presents with abdominal discomfort, ठीक है, और bloating and pain that improves with defecation. और इसमें कोई structure abnormality नहीं होती और and this condition often worse by stress, diet and hormonal fluctuation like around menses in women. A 24-year-old married woman presented with breast lump of 4 into 5 centimeter in size, which is freely mobile, rubbery to firm in consistency. Changes in size during menstruation. The most likely diagnosis is fibroadenoma. बेसिकली इसे ब्रेस्ट माउस भी कहते हैं. इट इज़ अ बिनाइन मोबाइल फर्म ब्रेस्ट मास दैट चेंजेस इन साइज विद हार्मोनल चेंजेस स्पेशली अराउंड मेंस्ट्रुअल साइकिल. सो कोई भी फर्म मोबाइल मास हो दैट चेंजेस इन साइज with menstrual cycle, so you could consider fibroadenoma breast. A primary caregiver is taking rifampicin and isoniazid for tuberculosis. The most common side effects related to them are, I already cleared in the past paper कि आइसोनियाजेड से पेरिफेरल न्यूराइटिस होता है. पायराजिनामाइड कॉजेज इंक्रीज यूरिक एसिड लीडिंग टू गाउट. इथाम्ब्यूटोल कॉजेज ब्यूशुअल प्रॉब्लम. रिफाम्पिसिन कॉजेज रेड ऑरेंज सिक्रीशन ऑफ द यूरिन. ये आपके पास पास्ट पेपर में भी रिपीट हो चुका है, 2019 में भी रिपीट हो चुका है. तो आपने आइसोनियाजेड कॉजेज पेरिफेरल न्यूरोपैथी due to pyridoxine deficiency and rifampicin causes orange red colored secretion. A 30-year-old woman came at 12 weeks of gestation. She had a 6 centimeter adnexal mass on ultrasound. The most appropriate management would be, ठीक है, 12 week pregnancy है, 6 centimeter adnexal mass है. So most of the ovarian cysts in early pregnancy are benign and often resolve spontaneously. So you should follow up with ultrasound unless any complication develop. If a complication develop, then you may go for laparoscopy and cystectomy. A primary gravida came at 34 weeks of gestation with headache, BP of 160 by 100 and proteinuria of +4. She is taking antihypertensive. Best management plan for her is preeclampsia at more than or equal to 34 weeks of pregnancy is an indication for delivery. BP should be controlled, seizure should be prevented before the induction of C-section. तो हमारा एम क्या होगा कि we will control her BP, prevent convulsion and then we will do the termination of pregnancy by induction or by C-section. So answer is C. Gravida 2, para 1 at 39 weeks of gestation came with painful uterine contraction every 3 to 4 minutes. Cervix dilated from 1 centimeter to 2 centimeter over 3 hours. Most appropriate management. अच्छा, अभी आप देखें कि the patient is in the latent phase of the labor. Slow progress in early labor is usually common and is not an immediate cause कि आप उसे intervention करें. So you should do reassessment after 4 hours. ठीक है.
अच्छा, patient with backache, abdominal pain, purulent discharge, cervix bleed on touch treatment. Cervix bleed on touch means कि patient is having any infection, ठीक है, pelvic infection, and backache and abdominal pain suggest she is having PID, and the most important cause of the PID is chlamydia. So for chlamydia, we give doxycycline, and डॉक्सीसाइक्लिन जो है आप देते हैं, चूँकि टेट्रासाइक्लिन या डॉक्सीसाइक्लिन होगी, लेकिन यू शुड नो कि आपने प्रेगनेंसी में क्या देना है, ठीक है ना. डॉक्सीसाइक्लिन एंड ओफ्लॉक्सासिन आर कंट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, सो यू कैन गो फॉर एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन 500 mg 4 times daily, और एरिथ्रोमाइसिन 500 mg BD, और amoxicillin. Gravida 2 para 1 at 40 weeks. Bishop score 2. CTG reactive management. अच्छा, 40 weeks is not an indication कि आप उसको जो है ना इलेक्टिव LSCS कर दें या इंडक्शन शुरू कर दें उसकी, और जो है कोई ऐसी इंडिकेशन भी नहीं आ रही है, CTG भी रिएक्टिव है. सो जस्ट विद द लो बिशप स्कोर, membrane sweeping can help stimulate a natural labor before a pharmacological induction is considered. Ventouse delivery planned at +1 station, right occipital anterior position, most likely complication. The ventouse delivery commonly lead to cephalic hematoma and may also lead to vaginal trauma due to instrumentation. So you must know what is cephalic hematoma and caput succedaneum. So cephalic hematoma is a collection of blood between the periosteum and the skull, and caput succedaneum is a soft tissue edema. तो कैप से याद रखना है आपने, कैपिट succedaneum is a cap like swelling, and cephalic hematoma, capit succedaneum crosses the suture line and is a cap like swelling. और cephalic hematoma में देख लें कि ये जो है swelling does not cross the suture line.